नमस्कार, NockingNews.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। मोदी राज, वॉर रुकवादी पापा। वो जो वॉर रुकवादी पापा है ना, वो एक विज्ञापन की एक लाइन नहीं है। एक बहुत बड़ी हिंदुस्तान में ऐसी कम्युनिटी है जो उन झूठों को दोहराती रहती है जो उनको तोते की तरह रटा दिए गए। और उनको रटाने के बीच में जब ये तोता रंटत पहुंच जाए ऑक्सफोर्ड, और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भी ऐसी ऊंची ऊंची जब मोदी राज के बारे में फेंकी जाने लगे, तो उसके बाद आता है एक ऐसा जवाब जिस जवाब ने मोदी राज की एक एक ईंट को खोलकर सामने रख दिया। ज़बरदस्त बहस है। अगर आपने नहीं सुनी हो तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी यूनियन की बहस सुनिए। लेकिन उस बहस में क्या हो रहा है पहले ये समझिए। बहस तो मैं यहीं सुनवा दूंगा। अंग्रेजी की बहस पे हिंदी में सबटाइटल लगाए हैं ताकि आपको सब कुछ टकाटक मिले। पहले जान लेते हैं मामला क्या है। मामला ये है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का जो यूनियन है उसकी एक वहाँ पर वाद विवाद चल रहा है, बहस चल रही है। उसमें बहुत सारे लोग जा रहे हैं, अपने भाषण दे रहे हैं। तो पलकी शर्मा उपाध्याय, वो पहले जो जी न्यूज़ में होती थी, वांटेज करके कुछ, अब वहाँ पे हैं वो नेटवर्क 18 में, वो गई थी वहाँ मोदी युग के गुणगान करने। और वो जो पूरा आईटी सेल वाला, ऐसा लगता है जैसे भाषण उन्होंने मोदी जी के कार्यालय से लिखवा लिया हो। और वही कि भारत से जब मैं आ रही थी तो रास्ते में एक नारियल पानी वाला क्यूआर कोड से पेमेंट ले रहा था और नारियल पानी बेच रहा था। उसके पास बैंक अकाउंट है, ये हिंदुस्तान बदल गया है, वगैरह वगैरह। भारत में इंटरनेट है, मोबाइल है। 9 साल पहले 15% था, आज 49% है इंटरनेट का पेनिट्रेशन। Earlier this week, I was on my way to the Delhi airport. There was a lot of traffic. At one point, the car stopped. On the roadside, I saw two vendors. One was selling fruit, the other was selling coconut water. What caught my attention was not what they were selling, but how they were selling it. Both had a QR code prominently displayed. And every single customer walked up to them, scanned this QR code and paid for their purchase, every single one of them. To me, this is a picture of today's India. It shows three developments, three of the many developments I shall list out tonight. Number one is financial inclusion. Both the vendors had a bank account linked to their mobile phone. Number two is internet or mobile penetration, what we call digital India. It was 15% 9 years back. It's 48% today. And number three is the airport traffic. It just keeps swelling even though we are at the receiving end. We see what it shows. From 67 million 9 years back to almost double now. To me, these things signify the path that India is on. The previous speakers have defined the motion well, but in case the evening drinks have kicked in, let me repeat. This House believes Modi's India is on the right path. And how do you determine if the path is right or wrong? You look at numbers, data, surveys, reports. I shall refer to all of these as I make my arguments. But I also want to dwell on something that's more personal, more important, I think, yet unquantifiable. I'm talking about the experience of living in today's India. I have lived in many Indias. The wary India where exciting policies and positions were abandoned. The self-doubting India, where decisions were taken based on global opinion. And today a more confident India where the world comes for leadership and inspiration. You cannot put a premium on that. Indians are more prosperous at home and hence more confident abroad. Let me also tell you what I saw at the airport here in London, at the immigration counter. I saw Indians proudly flaunting their passport, none of the fidgeting or self-doubt of the last century. And if I may add, the immigration officer almost looked impressed. She was either a fan of India or just worried that she was holding up one of Rishi Sunak's relatives. We are proud of what we share with the world. Bollywood, masala chai, yoga, cricket. India today is a soft power giant. At the same time,
India is not a timid democracy that tolerates terrorism or betrayals. When Pakistani terrorists attacked Kashmir's Pulwama, India carried out surgical strikes on Balakot. Today's India is not a pushover country. It's a world power denied. मतलब ये ऐसा तर्क है, 9 साल पहले मेरा मुन्ना 6 साल का था, अब 15 साल का हो गया है, उस वक्त आईफोन 11 नहीं आया था, आज आईफोन 15 आ चुका है। अरे भैया, समय के साथ तो चीज़ें बढ़ेंगी। दुनिया में ऐसा देश बता दो ना जब पेनिट्रेशन इंटरनेट का कम हुआ हो। अब इंटरनेट आ रही है तो लोग लेंगे ही लेंगे। खैर, मोदी का भारत सही दिशा में जा रहा है, मतलब पूरा उन्होंने वहां ऑक्सफोर्ड में भाषण दिया लगातार। इसके साथ साथ वो कह रही थी भारत अपने फैसले अब खुद लेता है, विदेश। अब इन सब बातों में से किसी का कोई प्रमाण नहीं है, हवाई मोदी ने और रुकवादी पापा टाइप का। विदेशों में कॉन्फिडेंट हैं भारतीय लोग और वगैरह वगैरह। और तो और आज जब मैं आ रही थी लंदन में, तो जो इमिग्रेशन काउंटर है ना, वहाँ पे लोग भारत का पासपोर्ट लेकर इठला रहे थे और शान झाड़ रहे थे उसकी। भारत बॉलीवुड, मसाला चाय और क्रिकेट के लिए ही नहीं जाना जानता है। भारत एक सॉफ्ट पावर हो चुका है, टेररिज्म को बर्दाश्त नहीं करता है, धोखेबाजी को बर्दाश्त नहीं करता है, वगैरह वगैरह। अब कौन बताए कि चीन से जब घुसे और हमारे सैनिकों को मार दिया, तो हमारे चीन समर्थक पार्टी की सरकार कह रही थी कि ना कोई घुसा है ना घुसेगा। इसी तरह से भारत की पहचान अब वो नहीं है जिसके अंदर घुसपैठ करके कुछ लोग आए थे। आज भारत की पहचान कुछ और है। ये सब तमाम सारी बातें हैं। और वही मनमोहन सिंह ने जो बैंक अकाउंट खोलने का सिलसिला शुरू किया था, तो इतने बैंक अकाउंट खुल गए और इतने लोगों को जो है वो गैस कनेक्शन मिल गए, वगैरह वगैरह। जब भारत आज़ाद हुआ तो हिंदुस्तान में एक भी गैस का कनेक्शन नहीं था। तो इसका मतलब क्या है? खड़गे ने बड़ा अच्छा इसका उत्तर दिया है कि भारत पहले कुछ नहीं बनाता था, आज उस भारत से जो है वो सैटेलाइट उड़ रहे हैं। तो इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है। तो कोई 10 साल के कामकाज का ऑक्सफोर्ड में जाकर भी पलकी शर्मा कोई भी उत्तर दे नहीं पा रही थी, गोल गोल फेंके जा रही थी। उनको लगा था लंदन है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है और ये इमोशनल बातें हैं। और मेरे को ऐसा लगा, मैंने ये देखा, मेरा तो दिल खुश हो गया। मैंने इठलाते हुए देख लिया लोगों को पासपोर्ट समझ के हाथ में लेकर, तो वो फेंके जा रही थी। और जैसे ही उन्होंने फेंका, मोदी जी को और क्या चाहिए था? मोदी जी ने एकदम ट्विटर पे एक ट्वीट लिखा अंग्रेजी में, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ लाउडेड नेटवर्क 18 जर्नलिस्ट पलकी शर्मा। और उसने ये कहा वो कहा वगैरह वगैरह। तो मोदी जी का क्या था ट्वीट, ये सुनिए पहले। यू हैव गिवन अ वंडरफुल ग्लिम्स ऑफ द मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन टेकिंग प्लेस अक्रॉस इंडिया। भारत में जो अद्भुत बदलाव आ रहे हैं उसकी झलकी दी आपने पलकी, मोदी जी ने ट्वीट किया। ये है। और जब ये ट्वीट कर दिया मोदी जी ने, तो अब रुको जरा ठहरो, वो एक जो आजकल लोग लगा देते हैं वीडियो के बीच में, उसकी बारी आती है। और जब इसकी बारी आती है तो उसके बाद बोलना था प्रशांत भूषण को। प्रशांत भूषण का ये भाषण हाल के सालों में जितने भाषण हुए हैं उनमें सबसे ज़्यादा पावरफुल था। प्रशांत भूषण ने नाली गैस से लेकर, बादलों में हवाई जहाज घुसाने से लेकर, भारत के गरीबी के नीचे चले जाने से लेकर, बेरोजगारी के बुरे हाल को लेकर, पलकी शर्मा के झूठे आंकड़ों को लेकर जो तबला बजाया है, तो एक सांस में बजाते चले गए, बजाते चले गए, बजाते चले गए। जब आप देखते हैं सोशल मीडिया पे कोई एक चीज़ देखते हैं तो आपको कहता है अरे यार मोदी जी ने तो ये भी किया, क्या क्या बता दें इस चुनाव के टाइम पे कि इन्होंने 10 साल में क्या बंटा ढार किया, ये लोगों के दिमाग में आता है। और वो लेकिन उनके ये रहता है यार कि अब कुछ तो छूट ही जाएगा, इतनी सारी चीज़ें वगैरह वगैरह। तो प्रशांत भूषण का ये भाषण, ये वीडियो मैं जो आज बना रहा हूँ, इसको आप शेयर कर दो। इस भाषण में अंग्रेजी में दिया प्रशांत भूषण ने, मैंने उसको हिंदी में सबटाइटल लगाए हैं पूरे भाषण में। कुछ 19-20 आगे पीछे हो सकता है कि वो डायलॉग यहाँ बोल रहे हैं आगे पीछे, लेकिन अगर आप हिंदी में पढ़ते जाएंगे तो आपको अंग्रेजी में सुनने की जरूरत पड़ेगी नहीं। तो वो प्रशांत भूषण का भाषण 10 साल के मोदी जी के कार्यकाल की पूरी कहानी है। पलकी शर्मा उपाध्याय के उस जवाब को जिस तरह धोया गया है ना, वो अद्भुत है।
प्रशांत भूषण ने एक एक चीज़, ऐसी चीज़ें जो आप देखते रह जाएं, बोलने की आज़ादी छीन ली है, जिसको चाहे जेल में डाल देते हैं, जिसका चाहे घर बुलडोजर से उड़ा देते हैं, ये सब लंदन में, ऑक्सफोर्ड में, विद प्रूफ, विद फैक्ट एंड फिगर्स। अब वो लोग क्यूआर कोड से सामान खरीद रहे हैं, इसको भारत की महान उपलब्धि बताने वाले लोग। बल्कि मैं आपको बता चुका हूँ, क्यूआर कोड से सामान खरीदने का मतलब यह है कि वो पैसा सारा बैंकों के पास ही रहेगा, इसमें जनता की कोई उपलब्धि नहीं है। बैंकों को ज़्यादा पैसा मिल गया और उस पैसे से वो अडानियों और अंबानियों को फाइनेंस कर रहे हैं, इसमें मेरी कोई उपलब्धि नहीं है। जो पैसा मेरी बैंक में, मेरे पर्स में रहता था, वो पैसा मेरी जेब में, मेरे पर्स से निकल के अब बैंक में रहता है, बैंक से बैंक में ही चला जाता है, और उस पैसे से मजा ले रहे हैं उद्योगपति और पूंजीपति। और इतना सारा पैसा पूरे देश के बैंकों का झोंक देने के बावजूद इस देश में वो रोजगार देने को तैयार ही नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि वो मुनाफा कमाना है तो मोदी जी से सेटिंग कर लेंगे, विदेशों से कोयला मंगाएंगे, महंगे दाम पे सप्लाई कर देंगे, आदमी को जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ना कुछ बनाना पड़ेगा ना कुछ करना पड़ेगा। विदेशी कंपनियों से हाथ जोड़ रहे हैं, मेक इन इंडिया कर लो, भारत में आके बना लो। अरे अपने यहाँ वालों को तो बोलो कि यहाँ कुछ बनाओ, सारा कारोबार तो वहीं से क्यों करते हो, एक एक पेमेंट और एक एक चीज़ वहीं से क्यों घूमती है, दुबई से, बड़े भाई साहब के यहाँ से। खैर, होगा किसी का कोई कमीशन वगैरह वगैरह। अरविंद केजरीवाल तो कहता है कि उस कंपनी में अडानी साहब तो केवल चला रहे हैं, बाकी तो सब मोदी जी का कारोबार है। कब बोला उसने विधानसभा में? तो आप भाषण सुनिए पहले प्रशांत भूषण ने किस तरह से धोया है, बाकी बात बाद में करते हैं। I rise here to oppose this motion because of the war that the Modi government has declared on the poor and on the livelihoods of the people. I rise against the motion because of the war that it has declared on minorities, on truth, on decency, on civility, on democracy and the rule of law. I rise against the motion because of the war that this government has declared on science and history. And I rise because of the war that it has declared on all our independent regulatory institutions. Let's start with the war on livelihoods and the poor. Palki said that India's economy is doing very well, that unemployment has gone down. Well, the National Statistical Commission in 2018, which is the body which does this, is the government body which does this survey of jobs and livelihoods, when it did its survey in 2018, it found that unemployment rates had gone up to 6.2%, which was unprecedented for the last more than 40 years. It was stopped from publishing that report. That report was allowed to be published only after the 2019 elections were over, causing two of the two independent members of the National Statistical Commission to resign. After that, the government has not even been doing a survey of unemployment rates. It's only an independent organization called the Center for Monitoring the Indian Economy which does that. And very recently, in April 23, it found that the unemployment rate in India had risen to 8.3%, again the highest ever. And this is despite the fact that the labor participation rate in India has come down dramatically because a very large number of people have just out of frustration stopped looking for jobs. It's not that they don't want jobs, but they have stopped looking for jobs because of the state of the economy. The hunger index, Mr. Dhawale also pointed out, is now India on the hunger index globally is number 107 out of 121 countries, below Pakistan, below Bangladesh, below Sri Lanka, below all the neighboring South Asian countries, and below many African countries.
Ms. Palki said that economy is doing very well, the poor are doing very well. This is a clear index of how the poor are doing. The annual incomes of the poorest 20% people of India plunged in 2021 by 53% compared to 2015-2016. In 5 years of the Modi regime, the annual incomes of the poorest 20% plunged 53%. Now, if in this situation, if the GDP is growing, and if it is going to fill only the coffers of people, cronies like Ambani, Adani, what good does it do to the people, to the vast majority of the people? Just to give you one example, recently there was a report that in Gujarat, the Gujarat government is buying electricity from Adani, from the Adani company today at more than 8 rupees per unit, even though the contracted price was, and the price that was being paid till 2021 was 2.83 per unit. That means tens of thousands of crores excess payments are being made to Adani while pauperizing the state of Gujarat and its people. So, this is on the issue of employment and livelihoods and poverty. She said that corruption has been reduced. Now, the anti-corruption institution for which the anti-corruption movement came, the Lokpal, has been just destroyed. Nobody, first they didn't make the Lokpal for 4 years. We had to approach the Supreme Court again and again on the Supreme Court's prodding, the Lokpal had to be made. And even that Lokpal has been made in such a way that nobody approaches the Lokpal these days. It has no credibility whatsoever. The corruption index in India is now ranked at 85 in the Transparency International Corruption Index, as opposed to number 76 in 2015. Apart from that, there is a war that has been declared on minorities, on truth and decency, on civility, on rule of law, and on democracy. Every day we see lynchings being reported in the media. People, especially minorities, are being beaten up and killed on the streets, sometimes on the ground of beef, sometimes as what is called love jihad, just because a Hindu girl is friendly with a Muslim boy, or just for no reason at all, just because the person is a Muslim. Every day you see reports of Muslims being beaten up just on the streets, shredding the rule of law, and the police just stands by without doing anything about it. There are encounter killings which are being celebrated by state governments. There was this, even though he may have been a criminal, a gentleman called Atiq Ahmed, he was shot in cold blood, virtually in broad daylight, in the gaze of the entire media, and the mainstream media and the chief minister of UP was celebrating, which was something which was clearly a fake encounter, and this has become the order of the day. This is just one example. There are bulldozers which are being used to demolish the houses of people who are accused of some crime. Firstly, they have not been proved to have committed any crime. Secondly, even if they had been proved to have committed a crime, bulldozing their house is not something that you can do. You can't punish their families for a crime that they have committed. And therefore, the rule of law is being demolished under these bulldozers. Arrests of activists, political activists, journalists, human rights activists have become the order of the day on fake trumped-up charges. In the Bhima Koregaon case, some of our finest human rights activists have been put in jail on the basis of
clearly fabricated evidence which has been proved to be fabricated, that is, emails inserted into their emails by using this software snooping device called Pegasus. And yet, for 6 years, more than 5 years, they have been languishing in jail without bail, without even the trial having started. And this has become the state of liberty of people in the country today. Fake news is being spread rampantly through something called the IT cell, which, as Swati Chaturvedi, a celebrated journalist, had written in her book called I Am a Troll, is being run by no other than the Prime Minister himself, which just propagates all kinds of fake news, hateful news, etc. The media, in the Press Freedom Index, we were told India has slid down to 150 position out of 161, the lowest that it has ever been, and it has been constantly sliding under the Modi regime. The entire mainstream media has been brought to heel by the government and made an instrument of their propaganda by use of various techniques, inducements by way of advertisements, use of investigative agencies to browbeat them, and various other instruments which have been used to make them an instrument of the government's propaganda. And they have been just day and night spewing hate, spreading disinformation, etc. Every evening, if you watch the evening news, it's just hate and trying to divert attention from the real news by pushing these kind of hateful communal stories. There is a war that has been declared on science. Today, can you imagine, the periodic table has been taken off the textbooks of schools? The Darwin's theory of evolution has been taken off the textbooks. It's not surprising, because where you have the Prime Minister who spouts such scientific nonsense that it's unimaginable what he says. He says that I saw a fellow who put a vessel on top of a nala, which was a dirty drain, and the gas from the drain was fueling his tea-making thing. He says that there is no climate change. People have started feeling warmer because their bodies cannot bear it. All kinds of things. He says that I asked the Air Force to bomb Balakot even though there were clouds, because I felt that now in the clouds the radars will not be able to detect our planes. So, when you have this kind of a Prime Minister, obviously there will be a war on science. There is a war on history. The whole Mughal history has been removed from the history textbooks. People like Gandhi, Nehru, etc. are being replaced by Savarkar. Savarkar, who was accused for Gandhi's murder, his stories are finding place in the textbooks, and Nehru and Gandhi, etc. are going out of the textbooks. The chairman of the University Grants Commission is a gentleman who was earlier the Vice Chancellor of Jawaharlal Nehru University, who famously said that we need to put tanks on the campus of the university in order to instill nationalism among the students. These kind of people have been made head of academic institutions for higher learning. There is a war on institutions. The judiciary, all the independent regulatory institutions, including the judiciary, Parliament, no debate happens, no discussions, laws are just passed in a flash. In fact, the sittings of Parliament have been reduced to something around 60 per year, as opposed to more than 100 or 150, which used to be the case earlier. No bill is ever sent to parliamentary committees for greater discussion and taking feedback from the other independent experts, etc.
Investigative agencies have been brought totally to heel and made instrumentalities of the government. The Election Commission, which used to be an independent institution, has also been brought under the control of the government, and the Supreme Court recently, Constitution Bench of the Supreme Court, in a very detailed judgment said that the selection of the election commissions cannot be left in the hands of the government because they are appointing totally compromised people. All other institutions, the CAG, the NHRC, the Law Commission, everything, all these independent institutions, their independence has been compromised. And therefore, it is for this reason that I stand up here to say that under this Modi government has led India to a wrong path because it has destroyed the lives and livelihoods of the poor. It has degraded critical thinking and scientific temper. It has promoted falsehood and hate. It has promoted violence and lawlessness. It has subverted independent regulatory institutions. It has degraded democracy and made it a game of money and propaganda. Thank you very much. अब 2024 में जब हम इस देश में नई सरकार चुनने जा रहे हैं, उस समय ये बहरहाल प्रशांत भूषण का ये भाषण पूरी की पूरी कहानी साफ साफ बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने और मोदी जी ने इस देश में क्या क्या महान काम किए। और ये भाषण भारत में नहीं बता रहा है, ये भाषण ऑक्सफोर्ड में बता रहा है, विदेश की धरती पे जाके झूठ बुलवा के अपनी पार्टी के समर्थन में प्रोपेगेंडा